Good morning, students. This video is for class 5 students, science subject, chapter number 4, pollination. In this chapter, we are going to study about these topics. The topics are parts of a flower, types of flower, that is bisexual and monosexual flowers, pollination, the process of pollination, and the ways of pollination, that is self and cross pollination. Flowers perform a very important function for the plant. Most of the plants produce flowers of different colors and scents in different seasons. They grow on small bushes, trees, or small herbs. Plants produce flowers to make seeds. Flowers give rise to fruit with seeds in it. New plants grow from seeds. So, what what is the main function? It is the most important, it plays the most important function for the plant. And what is the most important function? That is to grow new plants. How? you know Plants, they can produce flowers of different colors, different scents. It depends on the season in which they grow. So they can grow on small bushes also, and trees also, and some small herbs also. Plants, they produce flowers to make seeds. Why does plants produce flowers? They produce flowers to make seeds, because flowers only make seeds, and these flowers, they give rise to fruit, and those fruit have seeds, and that seed is useful in making growing the new plants. So what are the parts of a flower? Flowers are the reproductive organs in flowering plants. A flower is generally supported by a part of stem or stalk called pedicel. The pedicel has a swollen end called the thalamus. So, what are the different parts of in a flower? First, you see this diagram. Okay, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है फ्लावर का, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हुआ? वो ऑर्गन जो नए ऑर्गेनिज्म या नए फ्लावर या नए प्लांट बनाने में हेल्पफुल हो. तो फ्लावर ही वो ऑर्गन है प्लांट का जो नए नए प्लांट बनाने में हेल्पफुल होता है. Now what are the different parts of a flower? In this diagram you can see the parts of flower, that is pedicel, thalamus, this is sepal, petal. You see, these are ovule, filament, anther. Okay, so first is pedicel. What is pedicel? Pedicel एक stalk like structure होता है जो stem के साथ flower को attach करता है. You must have seen this green portion that attaches the flower to the stem. This is called pedicel. The pedicel has a swollen end called the thalamus. यहाँ पे एक मोटा सा कुछ structure होता है which is called thalamus. It is swollen end जिससे flower attach होता है. Thalamus का काम क्या होता है? It stores food for the flower. Okay, a flower has 4 main parts. 4 main parts होते हैं flower के, that is calyx, corolla, androecium and gynoecium, that are arranged in whorls on the thalamus. ये चारों parts जो हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये चारों ही पार्ट्स एक फ्लावर के चारों तरफ वर्ल्ड में एक थैलेमस, जो फ्लावर मतलब फ्लावर जो कॉन्स्टिट्यूट करता है थैलेमस के ऊपर होता है, और थैलेमस के ऊपर एक वर्ल्ड यानी एक सराउंडिंग एक गोलाकार के तरीके में एक घेरा बना के ये चारों ऑर्गन्स जो हैं, ये चारों पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फ्लावर को. द फर्स्ट पार्ट इज द कैलिक्स. दिस इज द आउटर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर. सबसे बाहर का जो रीजन होता है उसको कैलिक्स बोलते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेपल्स. नाउ कैलिक्स किससे मिलके बना होता है? ग्रीन स्ट्रक्चर्स, ऐसा आपने देखा होगा फ्लावर के नीचे ऐसा पोर्शन होता है विच इज कॉल्ड सेपल. सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज एंड द इनर पार्ट्स ऑफ द flower in the later stage. What is the function of sepal? Sepal protects the flower in the bud stage. जब bud होता है flower, bud के form में होता है, तो you must have seen कि इसके ऐसे ग्रीन पोर्शन जो है इसको कवर किया होता है. आप कभी एक कली देखना फ्लावर की, एक बड देखना फ्लावर की, उसके जो है चारों तरफ यू मस्ट सी दिस ग्रीन पोर्शन. दिस इज कॉल्ड सेपल. वो जो है बड को प्रोटेक्ट करता है. और लेटर स्टेज में क्या होता है, बड़े जब हो जाते हैं फ्लावर,
देन इनर पार्ट्स, अंदर के जो पार्ट होते हैं फ्लावर के, उनको प्रोटेक्ट करता है. ओके, दे कैन ऑल्सो प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट. अदर फंक्शन कैन ऑल्सो प्रिपेयर फूड. देयर मे बी 5 or more sepals in a flower. There may be, number can be vary for from 5 to more. The next part is corolla. The second wall of a flower is called corolla. जो second area होता है, that is called corolla. It consists of a set of brightly colored leaf-like structure called petals. Now पेटल्स क्या होते हैं? ये तो सेपल हमने देखा ग्रीन पोर्शन होता है, और जो कलर्ड पोर्शन हमें दिखता है दैट इज कॉल्ड पेटल. लीफ लाइक ये पेटल्स हैं. यू सी, पेटल्स में प्रोड्यूस डिस्टिंक्ट सेंट्स टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स टूवर्ड्स द फ्लावर. अब पेटल्स का मेन काम क्या होता है? दे हैव डिफरेंट डिस्टिंक्ट सेंट्स, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर की तरफ. These insects then help in the process of pollination. And what does these insects do? They help in the function of pollination. What is pollination? We will learn further in this chapter. The next part is androecium. It is the third whorl of a flower. That is थर्ड जो गोलाकार के तरीके में जो प्रेजेंट होता है फ्लावर के चारों तरफ, दैट इज़ द एंड्रोशियम. एंड्रोशियम इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टेमन्स. जैसे कैलिक्स वॉज अ कलेक्शन ऑफ सेपल्स, कोरोला वॉज द कलेक्शन ऑफ पेटल्स. लाइकवाइज एंड्रोशियम इज़ द कलेक्शन ऑफ स्टेमन. और एक स्टेमन क्या होता है? स्टेमन इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. ओके, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमन. Each stamen comprises of two parts. You see here in the diagram, this is one stamen. Okay, all together this is called, many stamens together are called androecium. और एक stamen का part क्या होता है? दो parts होते हैं उसके, anther and filament. The swollen part above is anther and the filament is below part. The filament is the long slender stalk of the stamen. Okay, filament is stalk like, and anther is present at the tip of the filament. Anther produces dust like particles called pollen grains. Anther क्या produce करता है? Dust जैसे कुछ particles होते हैं flower से जो निकलते हैं, that is called pollen grains. Pollen grains contain the male gametes or the male reproductive cells. And what is the function of pollen grains? Pollen grains have male gametes. Okay, so they help in reproduction. Now most plants have yellow pollen, but there can be red, purple, brown and white pollen grains also. So many plants have, mostly there are yellow color pollen, but they could also be red, purple, brown or white depending on different different flower have different colors. Okay, now the next portion is gynoecium. It is the innermost whorl of the flower. The innermost portion of the flower is gynoecium. It is usually located at the center of the flower. Gynoecium is a collection of female reproductive units called carpels or pistils. Gynoecium किससे मिलके बना होता है? किसका कलेक्शन होता है? कार्पल्स या पिस्टल्स. Each pistil comprises 3 parts. Now you see in this diagram, this is a pistil, और बहुत सारे पिस्टल मिलके गाइनोशियम का फॉर्मेशन करते हैं. एंड गाइनोशियम इज द इनर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ अ फ्लावर. सो बेसिकली this pistil portion has 3 parts. First is the stigma part, then is the style and then is the ovary. This is the ovary. Okay, और ओवरी के अंदर क्या होता है? ये ओव्यूल है, और ओव्यूल के बाहर जो लेयर है दिस इज कॉल्ड ओवरी वॉल. तो ओव्यूल, ये जो ओवरी वॉल और ओव्यूल मिला के है, दिस इज कॉल्ड ओवरी. ओके, सो दीज आर द 3 रीजन्स इन अ योर पिस्टल. नाउ स्टिग्मा इज द टॉप मोस्ट स्टिकी पार्ट ऑफ द पिस्टल. ये स्टिकी पोर्शन होता है सबसे ऊपर. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द pollen grains. Now what is reproduction? You all know what is pollination. Pollination वो process है जिसमें कि male reproductive cell जो है वो आकर इसके ऊपर बैठेगा. We know what is reproduction. Reproduction is the fusion of male and female gametes. So this portion is the part of female reproductive system. You know, gynoecium is the female reproductive organ, and androecium produces pollen grains. You know, anther was producing pollen grains. So the pollen grains come and stick to this sticky portion that is called stigma. So function of stigma is that it is responsible for receiving the pollen grains.
The next is the style. Style is a long tube-like structure that connects the stigma to the ovule. Next is ovary. Now what is ovary? It is the swollen base of the pistil. It contains ovule. Ovule contains eggs or the female gametes. So ovule के अंदर ये छोटे छोटे you can see these are the eggs or the female reproductive gametes. After fertilization, the ovary forms the fruit of the plant, whereas ovules form the seeds. What happens when fertilization takes place? When the pollen grains come and stick to this stigma and they pass through this style to the ovary, and ovary is the female reproductive part. So when pollen grains and ovary they fertilize together, then after fertilization what happens? This ovary, the ovary, it forms the fruit of the plant, and the ovule, these small seed like structure, they form the seed of the plant. Okay. The next topic is types of flower, bisexual and monosexual. A flower may be or may not possess both male and female reproductive parts. Okay. हो सकता है कि फ्लावर में या तो एक मेल पोर्शन हो, एक फीमेल, अलग अलग पोर्शंस हो, या तो एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल दोनों पोर्शंस हों. So on the basis they are classified as, on this basis they are classified as bisexual and monosexual. Okay, इसी basis पे इनको categorize किया गया है. First is the bisexual flowers. Some flowers have both stamen, that is the male reproductive part, and a pistil, that is the female reproductive part. Okay, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें बोथ male reproductive part. What was the male reproductive part? That was stamen, and the female reproductive part was pistil or carpel. तो दोनों जो है एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है. लाइक यू सॉ द डायग्राम विच वॉज शोन इन द प्रीवियस पेज, वहाँ पे दोनों एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट थे एक ही फ्लावर में. सो दैट वॉज बाइसेक्सुअल फ्लावर. Bisexual flowers have all four whorls. Okay, some of the examples are hibiscus, tulip, rose, lily. You can see this in these flowers. You can also get your activity done by observing these flowers. Okay, if you have rose plant in your home, you can check that there are these four whorls in the flower. Then monosexual flowers. What are the monosexual flowers? Some flowers have only one reproductive part, either stamen or pistil. कुछ प्लांट फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें केवल एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, या तो स्टेमन होगा या पिस्टल होगा, दैट इज या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव. सच फ्लावर्स आर कॉल्ड monosexual flowers. The flowers that have only stamens as their reproductive part are called the male flowers. जिनमें केवल स्टेमन प्रेजेंट है उनको मेल फ्लावर्स कहेंगे, और जिनमें पिस्टल प्रेजेंट है केवल उनको फीमेल फ्लावर्स कहेंगे. The flowers of watermelon, pumpkin, cucumber and papaya are common examples of monosexual flowers. What are the example of monosexual flowers? Watermelon, pumpkin, cucumber, papaya. ये सारे जितने भी flowers हैं, ये सारे जितने भी plants हैं, इनके जो flower होते हैं, these are monosexual flowers. Okay, so that is all for this video. The next topic, that is the pollination topic, we will be starting in the next video. So you go through this video and ask me if you have any doubts. Thank you.